Swayam Prabha. Digital India. Educated India. I am Riddhima. And I am Manik. So आज आपको हमारे आउटफिट्स में कुछ डिफरेंट या फिर कुछ वियर्ड लग रहा है? Looking very nice. सर आप यूनिक हैं. अगर यहाँ पे कॉमन लोग बैठे होते तो वो उनके लिए हमारा फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाता. क्यों? क्योंकि हमारे सॉक्स का कलर खराब है. सर यही प्रॉब्लम हमारी कंट्री में 15 मिलियन विजुअली इम्पेयर्ड लोग फेस करते हैं एंड ग्लोबली देयर आर 39 मिलियन विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. और इस प्रॉब्लम को ना अभी तक किसी सरकार ने और ना किसी एंटरप्रेन्योर ने केटर किया था. सर यही सेम प्रॉब्लम हमारी स्कूल की एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्ची नव्या शर्मा ने फेस किया था. तो दरअसल ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हर पेरेंट्स वर हॉस्पिटलाइज्ड एंड उस दौरान देयर वाज नोबडी हु कुड टेक केयर ऑफ हर एंड तो शी एक्सीडेंटली वोर 2 डिफरेंट कलर्ड सॉक्स एट द सेम टाइम एंड देन शी फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड अबाउट इट. बाद में शी वेंट टू हर साइंस टीचर डॉक्टर शिल्पा रघुवंशी चौहान एंड उस टाइम पे वी केम अप विद अ सॉक्स पेयरिंग डिवाइस कलर सिंक. सर दिस डिवाइस वाज रैंक्ड 1 out of 7.5 lakh submissions nationwide in Inspire Manik Awards. As you can see here, we were awarded by our very own Union Minister Dr. Jitendra Singh. Next, we were broadcasted nationwide on All India Radio along with Madam Smriti Irani under Nayi Soch Nayi Kahani. Moving forward, you will be amazed to know कि we have also gone to an international level. We represented India as student innovators in AIGIF 2023. In fact, we were applauded and recognized by all the representatives, the ministers and the dignitaries of all the 11 countries at the ASEAN Summit. Next, sir, we were invited as experts in India International Science Fair 2023. Apart from that, we were also awarded People's Choice Award in IRIS Nationals. Sir, talking about patent, that has already been filed with National Innovation Foundation. In fact, we got a grant of 1,72,681 by School Innovation Council, Government of India. अब इन्वेस्टर्स आपके दिमाग में ये बात तो ज़रूर आई होगी कि एक सॉक पेयरिंग डिवाइस इतनी इंपॉर्टेंस और इतने अचीवमेंट्स के साथ कैसे हो सकता है. एक बात जो आपको ये समझनी चाहिए कि एक इंसान पहले स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है एंड फिर ऑफिस जाता है. हर इन जगह पे एक यूनिफॉर्म होती है और यूनिफॉर्म एग्जैक्ट होती है. अगर ब्लैक है तो आप ग्रे नहीं पहन सकते, वाइट है तो आप पेल नहीं पहन सकते. और सर एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान के लिए कलर फील करना तो इम्पॉसिबल सी बात है. तो इसलिए सर हमारा जो प्रोडक्ट है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. Sir, talking about alternatives, we have no other alternatives or rather competitions because market में ऐसा कोई device है ही नहीं जो socks को pair करता हो except for these sock sorters. अब these are plastic rings. इसमें a person with visuals has to pair the socks, plug them in and then visually impaired person will take them out and wear them. इसमें there is no concept of independence. Moving on, so let's get back to the story. जब नव्या शर्मा with her mother tried to search on the internet to find gadgets to her solution to her problem, they were surprised to find कि पूरी market में सिर्फ 3 ही solutions हैं. अब इनमें they are produced in Canada, England and Austria. None being indigenous, they are not even affordable despite being mere color detectors. The cheapest one costs about $150. So, our device is not only efficient but very affordable. I would also like to demonstrate the device. Calibration is done. This. And weight is 12 grams. And color is different. Dark sky blue. Yellow. So basically there could be 2 socks of the same color belonging to 2 different pairs. So this particular device checks the socks on 2 parameters, the weight and the color. Only if the weight and the color both are same, it is going to say that it is a match. It is a socks pairing device. It is also a color detector.
If I place two very closely, nearly matching socks, blue, navy blue and dark blue, it is going to distinguish. And weight is 12 grams. And color is different. Dark sky blue. Blue. We have taken these because this is a problem of many unaddressed children of our country, the visually impaired, and India is a home to maximum number of blinds. This is amongst the assistive technologies which the students are going to address, but it is so efficient that we have two versions of it. One of them is only a pairing device, which is a buzzer, which is going to have two different beeps, one for match, one for mismatch. It can be upgraded to this version by 2,000 rupees. In which it also gives an auditory feedback in terms of the color and weight. If both are same, then the person is going to pick it up and it is going to be the right pair. तो सर मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडिया में मार्केट जो है वो 2019 से ग्रो कर रही है और एक्सपेक्ट किया गया है कि 2023 में 3.9 बिलियन से मार्केट ग्रो करेगी तो 13.2 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2030 विद अ CAGR ऑफ 13%. सर इसी के साथ सर इंडिया इज होम टू 40% ऑफ ऑल द विजुअली इम्पेयर्ड. Sorry to interrupt in between. Market for assistive technologies, विजुअली इम्पेयर्ड but not for specific this product. अच्छा इसकी बात ही है. फॉर विजुअली इम्पेयर्ड. Overall you are talking about. यस सर. एंड सर इंडियन ऑस्ट्रियन रीजन जो है वो इस मार्केट का हॉटस्पॉट है. सारा ट्रेड जो इनका मेजर इंस्ट्रूमेंट्स का होता है वो यहीं पे होता है. तो सर हमारे प्रोडक्ट के पास एक तो कोई कंपेटिटर नहीं है, इसलिए उसकी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और इसी के साथ उसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है. इसलिए सर वी आर सीकिंग 30 लाख रुपीज़ फॉर दिस प्रोडक्ट. 30 lakh for ये अभी प्रोटोटाइप है, प्रोडक्ट है. इसको अभी जैसे हमने रजिस्टर नहीं कराया स्टार्टअप, तो हमें उसी से स्टार्ट करेंगे. विद दिस फंडिंग हम रजिस्टर भी कराएंगे. हम गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स के साथ टैप करके एग्जिबिट्स जैसे स्टॉल्स भी लगाएंगे. हम वेरियस NGOs वगैरह में भी जाके हम इसको प्रमोट करेंगे और इसकी हम फिर प्रोडक्शन भी मास प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. you are from which school? Yes. Which school? सलवान पब्लिक स्कूल. Okay. So you know about exactly if you are asking something from the investor, then they need something in return back. breakdown. Okay. Probably return on investment. Okay, so that is something not possible for this stage. But I think for the grants and other things is possible for you, and that's something which you can look upon. Yes, sir. Please, thank you. I think this is the first prototype that you are having right now. So what is the end product that you are envisioning even if you get 30 lakh rupees? Because if I were to imagine this product, supposedly somebody in my home is visually impaired, such device should be that small that it should be in my pocket also. You know, I can take it out from my pocket and I have to just point out some vague, maybe some laser or something, and it can detect what exactly I have to adopt. You know, we have to think about this also. So, how you vision your product to be sold? Because this is not going to sold in the market, 100%. Right? It's heavy, it's bulky, and it's dependent to the location because it's required the power. So, I can understand on that thoughts. Yes, we will definitely try to reduce its size, make it more compact, and that is how it has to be battery operated. So that is how we are going to go ahead. Thank you.